Hello friends, welcome to Indit Minds. Today we will discussing on The Flea by John Donne. John Donne's The Flea is a quintessential example of metaphysical poetry, blending wit, intellectual argument, and unconventional imagery to explore themes of love and desire. The poem features a speaker attempting to seduce a woman by using the flea and as an extended metaphor. He argues that since their blood mingled within the flea, their physical union would be as insignificant and harmless. Through clever reasoning, scarred imagery, and humor, Donne trivialized societal notions and chastity and of chastity and honor. The flea exemplifies Donne's misery of conceits, presenting an audacious and playful argument that challenges traditional views on love, marriage, and morality. द फ्ली एक मेटाफिजिकल कविता जो जॉन डन द्वारा रचित है। यह कविता प्रेम और शारीरिक अंतरंगता के विषय में पर आधारित है, लेकिन इसके साथ ही यह सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक विचारों का भी विरोध करती है। कविता में एक पुरुष अपनी प्रेमिका को यह तर्क देता है कि एक फ्ली कीड़ा के शरीर में उनका खून मिलकर एक साझा संबंध बना चुका है। वह यह साबित करने का प्रयास करता है कि शारीरिक संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसका प्रतीक फ्ली खून के मिलन के साथ एक अटूट बंधन स्थापित कर चुका है। डन इस कविता के माध्यम से प्रेम और शारीरिक संबंधों और समाज और धर्म के दृष्टिकोण से परे एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। कविता का प्रारंभ पुरुष द्वारा एक फ्ली का उदाहरण देकर किया गया है जो उस प्रेमिका के शरीर पर कटा हुआ है। वह प्रेमिका से कहता है कि इस छोटे से कीड़े के शरीर में उसके खून का मिलन हो गया है और यह एक तरह से उसके बीच के अंतरंग संबंध का प्रतीक बन चुका है। वह यह बताता है कि यदि खून का मिलन कोई पाप नहीं है तो फिर प्रेम संबंध बनाने में क्या बुराई है। यह तर्क पुरुष का एक विशेष प्रकार का हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक तरीका है जो शारीरिक अंतरंगता को समाज के कठोर मानकों से परे एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। डन इस कविता में मेटाफिजिकल कंसीट बड़ी गहरी बौद्धिक विचारधारा का उपयोग करते हैं। वह फ्ली को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं जो न केवल शारीरिक संबंध का संकेत है बल्कि दो व्यक्तियों के बीच भावनात्मक और शारीरिक संबंध को भी दर्शाता है। पुरुष का यह तर्क है कि यदि एक छोटी सी फ्ली का खून मिलना कोई पाप नहीं है तो फिर उनके प्रेम संबंधों में कौन सी गलती हो सकती है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रेम के विषय को नया दृष्टिकोण देता है। वह यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि यदि फ्ली की मृत्यु पर कोई गंभीर दंड नहीं है तो प्रेम के शारीरिक अंतरंगता को लेकर समाज के दृष्टिकोण का विरोध किया जाना चाहिए। कविता में एक हास्यपूर्ण तत्व भी है जहां पुरुष अपनी प्रेमिका को यह समझाने के लिए फ्ली को एक तरह से उनकी शादी का प्रतीक मानता है। वह कहता है कि इस फ्ली के माध्यम से वे दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे एक विवाह के रिश्ते में दो लोग जुड़े होते हैं। यह इस प्रकार वह यह मानता है कि फ्ली की मृत्यु उन्हें अलग नहीं कर सकती। जब महिला फ्ली को मार देती है तो पुरुष इसे उसके संबंधों की मृत्यु के रूप में देखता है। इसके परिणाम स्वरूप वह यह दावा करता है कि यदि वह उसे नहीं समझती तो उसने अपनी आत्मा को मार डाला है, अर्थात वह अपने प्रेम और विश्वास को नष्ट कर चुकी है। कविता में डन ने धार्मिक और शारीरिक तत्वों का मिश्रण किया है जो उस समाज में शारीरिक अंतरंगता और प्रेम के विषय में पर पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। वह इसे एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं जो किसी भी पारंपरिक और धार्मिक दृष्टिकोण से परे है। कविता में हास्य और व्यंग्य का उपयोग करके डन ने प्रेम और वासना के बीच अंतर को चतुराई से व्यक्त किया है। वह यह दर्शाते हैं कि किसी प्रकार का शारीरिक संबंधों में प्रेम और अंतरंगता को जोड़कर देखा जा सकता है।
कविता में प्रतीकात्मक तत्व भी प्रमुख है। फ्ली का शरीर जो खून से भरा होता है, उस समय के सामाजिक मान्यताओं और धर्म के दृष्टिकोण से शुद्ध और अशुद्ध के बीच का अंतर दिखाता है। डन यह सिद्ध करना चाहते हैं कि शारीरिक अंतरंगता को पवित्रता की परिभाषा से बाहर एक नया अर्थ मिल सकता है और यह प्रेम के एक सुंदर और स्वाभाविक पहलू के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वह यह भी दिखाते हैं कि फ्ली का मरना उनके तार्किक तर्कों की समाप्ति नहीं बल्कि एक नया मोड़ हो सकता है। कविता के अंतिम भाग में जब महिला फ्ली को मार देती है तो पुरुष इसे केवल एक प्रतीक के रूप में देखता है और वह यह समझता है कि वह आत्महत्या जैसी गलती कर रही है। वह यह कहता है कि इस क्रिया से वह अपनी आत्मा को नष्ट कर चुकी है, जो कि उनके संबंधों की समाप्ति का संकेत है। द फ्ली कविता एक ऐसी कविता है जो प्रेम, शारीरिक अंतरंगता और समाज के दृष्टिकोण पर सवाल उठाती है। जॉन डन ने अपनी बौद्धिकता, हास्य और प्रतीकात्मक का उपयोग करके इस कविता को एक गहरी और चुनौतीपूर्ण रचनात्मकता दी है। यह कविता आज भी प्रासंगिक है क्योंकि हमारे समाज में प्रेम और शारीरिक संबंधों के प्रति विचारों को चुनौती देती है और नए दृष्टिकोण की आवश्यकता को महसूस करती है। द फ्ली। मार्क दिस फ्ली, mark but this flea, and mark in this, how little that which thou donest me is। कवि पहले पंक्ति में श्रोता का ध्यान एक कीड़े फ्ली की ओर आकर्षित करता है और उसे यह छोटी सी बात के रूप में प्रस्तुत करता है जिसे महिला उसे देने से मना कर रही है, यानी शारीरिक संबंध। कवि यह कहता है कि यह बुरी बात नहीं है, इसे नकारना एक छोटी सी बात है। इट स्टक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी, एंड इन दिस फ्ली आवर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी। फ्ली ने पहले ही कवि का खून पिया और अब महिला का भी पी रहा है। कवि इसे एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है जहाँ दोनों के खून का मिलन हुआ है, जो उसके शारीरिक संबंध का प्रतीक है। Thou knowest that this cannot be said, a sin nor shame nor loss of maiden head। कवि यह दावा करता है कि फ्ली का खून पीना न तो पाप है, न शर्म की बात है और न ही यह उसके कौमार्य की हानि है। इस प्रकार वह महिला के शुद्धता के डर को तुच्छ ठहराता है। Yet this enjoy before it woe and pampered swells with one blood made of two, and this alas is more than we would do। फ्ली बिना किसी याचना के दोनों के खून का आनंद ले रहा है और इसने एक संबंध स्थापित कर लिया है जो उन्होंने बिना किसी प्रयास के किया। कवि यह कहकर महिला को चुनौती देता है कि यह फ्ली उनके रिश्ते से कहीं अधिक कर चुका है जो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। ओ स्टे 3 lives in on flea spare, were we almost nay more than married are। कवि महिला से फ्ली को मारने की मांग करता है, यह कहते हुए कि इस फ्ली में उसके तीनों जीवन, उसका और फ्ली का समाहित है। वह इसे उनके विवाह का प्रतीक मानता है और यह संकेत देता है कि उनका संबंध विवाह के स्तर पर है। द फ्ली इज यू एंड आई, एंड दिस आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज। यह फ्ली उनकी शारीरिक और मानसिक एकता का प्रतीक बन जाती है। कवि इसे उनके विवाह के बिस्तर और मंदिर के रूप में देखता है
और इस प्रकार फ्ली का कृत्य एक शुद्ध और पवित्र संबंध को दर्शाता है। तो पेरेंट्स grudge and we are met and clustered in these living walls object। कवि समाज और माता पिता के विरोध को नजरअंदाज करता है क्योंकि वह मानता है उनका संबंध इस फ्ली में सुरक्षित है जो एक गहरे रंग की दीवारों से घिरा हुआ है। फ्ली के शरीर को वह जीवित दीवारों के रूप में देखना चाहता है जिससे उनका संबंध संरक्षित रहता है। दो यूज मेक यू एप्ट टू किल मी, लेट नॉट डू दैट, सेल्फ मर्डरर एडेड बी, and sacrilege, 3 sins in killing 3। कवि फ्ली के मरने को हत्या, आत्महत्या और धर्म के खिलाफ एक पाप मानता है। वह इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए हाइपरबोलिक का उपयोग करता है, यह कहते हुए कि 3 प्रकार के पाप इस कार्य में शामिल हैं। क्रूएल एंड सडन, hast thou since, purple they kneel in blood of innocence। जब महिला फ्ली को मार देती है तो कवि उसे निर्दयता से और अप्रत्याशित रूप से खून बहाने के लिए दोषी ठहराता है। फ्ली की मृत्यु को वह निर्दोष खून बहाने के रूप में देखता है। Wherein could this flea guilty be, except in that drop which it sucked from thee। कवि यह तर्क करता है कि फ्ली का कोई दोष नहीं था, वह केवल उस रक्त का वाहक था जो उसने महिला के साथ लिया। उसकी मृत्यु को कभी अत्यधिक और अनावश्यक मानता है। Yet thou triumphest and sayest that you findest not thyself nor me the weaker now। महिला की जीत के बावजूद वह यह महसूस करती है कि फ्ली को मारने से न तो वह कमजोर पड़ी है और न ही कभी कमजोर हुआ है। यह कवि का मजाक है कि इस हानि रहित कृत्य से कोई असर नहीं पड़ा। Tis true, then learn how false fear be, just so much honor when thou yieldest to me will waste as this flea death took life from thee। कवि यह कहता है कि जैसे फ्ली की मृत्यु से कोई असर नहीं हुआ वैसे ही उसे शारीरिक संबंध बनाने से भी उसका कोई सम्मान नहीं जाएगा। वह महिला के डर को निरर्थक और गलत ठहराता है। द फ्ली जॉन डन की एक शानदार मेटाफिजिकल कविता है जो प्रेम, शारीरिक संबंध और समाज के दृष्टिकोण को चुनौती देती है। यह कविता आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह प्रेम और शारीरिक संबंधों को एक नए और विचित्र दृष्टिकोण से दिखाती है। प्रैक्टिस सेशन नाउ। I hope you are serious. Applicant, please ensure you have a pen and paper ready to take notes or complete your assessment. Very first question. Who wrote the Flea? Option B. John Donne is the poet of Flea. The Flea belongs to which literary period? Option B. Renaissance. The Flea is a product of the Renaissance, reflecting metaphysical wit and intellectual reasoning. What literary genre does the Flea represent? Option B. Metaphysical poetry. The poem is an example of metaphysical poetry using conceits and intellectual arguments. What is the central conceit in the Flea? Option B. The Flea as a symbol of love. The Flea symbolizes the union of the speaker and his beloved.
How many stanzas are in the Flea? Option B 3. The poem is structured in three stanzas. What argument does the speaker make about the flea? Option A. It represents a trivial loss of blood. The speaker trivialized chastity by equating it to the loss of blood taken by the flea. What is the rhyme scheme of flea? Option C. AABBCCDDD. The poem follows this rhyme scheme in each stanza. In the poem, what does the flea swell with? Option B. Blood. The flea swells with the blood of the speaker and the woman. What theme is most prominent in the flea? Option C. Love and seduction. The poem's central theme revolves around seduction and love. What tone does the speaker use in the poem? Option A. Humorous and persuasive. The tone is witty and intended to persuade the woman. What does the flea symbolize in the poem? Option A. Union and intimacy. The flea symbolizes physical and emotional union. Which religious imagery is used in the poem? Option A. The flea as a temple. The flea is linked to a temple housing their union. What does the speaker refer to as living walls object? Option A. The flea's body. Living walls object describe the flea dark body. How does the flea marry the speaker and the woman? Option A. By mingling their blood. The flea mingles the blood of the speaker and the woman. What does the flea death symbolize? The futility, the futility of the speaker's argument. The flea's death renders the speaker's argument ineffective. What color imagery is used to describe as the flea? Option C. Black. The flea's body is black, described as walls object. What is meant by three leaves on the flea spear? Option A. The flea, the speaker, and the woman are united. What does the purple nail signify? Option B. The shedding of innocent blood. The flea's death is metaphorically described as innocent bloodshed. The flea's pampered swell is a metaphor for what? Option C. The mingling of their blood. The swelling flea symbolizes their mingled blood. What type of persuasion does the speaker primarily use? Option B. Logical reasoning. The speaker uses intellectual argument to persuade the woman. What theme dominates the flea? The triviality of chastity.
The poem downplays chastity as insignificant. What does the speaker trivialize in the poem? Option B. Chastity. What does the speaker main goal in the poem? Option C. To seduce the woman. The speaker trivialized the importance of chastity. The poem is a seduction argument. Which literary device is central to the poem? Option C. Metaphysical conceit. The flea as a symbol of union is a classic metaphysical conceit. What societal norms does the poem challenges? Option B. Chastity and honor. The poem challenges societal norms surrounding chastity. How does the poem reflect Renaissance thinking? Option B. By blending sacred and secular ideas. The poem combines religious and secular themes typical of Renaissance thinking. What does the flea blood represent? The bond between the speaker and the woman. The flea's blood represents their connection. The speaker's argument in the poem is an example of option B. Logical persuasion. The speaker uses logic to persuade the woman. What role does humor play in the flea? Option C. To make the argument more persuasive. Honor makes the argument more engaging and less confrontational. How does the flea reflect Donne's wit? Option C. To make. Option D. All of the above. Donne's wit and is evident in the conceit, humor, and sacred profane imagery. Through its clever use of conceits, through its humor and playfulness, through is the blending of sacred and profane imagery. What type of the poem is the flea? Option B. Lyric poem. The plea is a lyric poem exploring personal emotions. The poem structure follows which pattern? Option A. 3 stanzas of 9 lines each. The poem has 3 9-line stanzas. What meter does the flea predominantly use? Option D. Mixed meter. The poem uses a combination of meters including iambic. What literary technique is used in mark but this flea and mark in this? Option B. Repetition. The phrase mark but this flea repeats for emphasis. How does Donne use paradox in the poem? Option B. To argue that the flea is both sacred and trivial. The paradox lies in the flea's dual significance. Which tone dominates in the poem? Persuasive. The speaker uses a persuasive tone throughout. What is the rhyme scheme of the final couplet in each stanza? Option C. CC. Each stanza ends with a rhyming couplet.
The flea serves as an example of 30, option C, conceit. The flea is as a symbol of union is a metaphysical conceit. How does the speaker address the woman? Option A, directly. The speaker addresses the woman directly to persuade her. What anger? What is the speaker reaction to the flea's death? Option C, mockery. The speaker mocks the woman's concern about the flea's death. Which poetic device is used in purpled thy nail in the blood of innocence? Option B, imagery. The purple nail creates a vivid image of the flea's death. How does the poem challenge the idea of honor? By equating it with the flea's death, by mocking societal norms, by questioning its importance, all of the above. Option D, all of the above. The poem challenges honor, chastity, and societal norms. The flea body is compared to a sacred temple, a marriage bed, a cloister. Option D, all of the above. Option D. The poem showcases metaphysical elements through wit and imagery. The flea is compared to a temple, a marriage bed, and a cloister. What does the speaker claim about false fears? Option D, B. They are as insignificant as the flea. The speaker dismisses her fears and as trivial. How does the poem reflect metaphysical poetry? Option A, through intellectual reasoning, through unconventional imagery, through blending sacred and secular themes. Option D, all of the above. Option D. The poem showcases metaphysical elements through wit and imagery. How does the poem end? Option B, with a resolution to the speaker's argument. The poem concludes with the speaker's ultimate realization that his argument has failed to persuade the woman. He attempts to turn the flea's death into a final metaphysical justification for their union, but the woman triumphs by dismissing his reasoning. What type of dedication is used in the flea? Option B, colloquial and conversational. Donne employs a casual, witty, and conversational tone to make his arguments persuasive and relatable, avoiding elevate or overly formal diction. What does the speaker mean by self murder? Option A, killing the flea is killing themselves. The speaker refers to the act of killing the fleas as self murder because it contains both of their mingled blood, symbolizing their unity. The death of the flea metaphorically signifies harm to both of them. What type of love does the poem primarily explore? Option C, physical and sensual love. The poem focuses on physical love and the speakers attempt to seduce the woman through logical and metaphorical reasoning, contrasting with spiritual or courtly love.
What literary tradition does the Flea parody? Option A. Patriarchal idealism. Donne mocks the exaggerated and idealized sentiments of patriarchal love poetry by reflexing lofty imagery with the mundane and unexpected symbol of Flea. The Flea by John Donne, through its witty and unconventional metaphysical conceit, explored themes of love, lust, and seduction. The poem's playful argument that a flea mingling of blood justified the physical union of lovers challenged conventional ideas of chastity and honor. Despite its humorous tone, the poem critiques societal norms, emphasizing the futility of certain traditional values. Today, the flea remains relevant as it reflects the continuing tension between societal expectation and personal desires, especially the discussion about relationships, intimacy, and the complexities of human emotions in the modern world. Its intellectual approach to love remains thought provoking. I hope you liked this video. Stay inspired, stay curious, let English literature lit- light your way. Keep exploring, keep learning. English literature awaits your next adventure.